like take it away with Rizwan's captaincy. Yeah, Rizwan's captaincy. Then I thought, yeah, do we put Saim above Rizwan in the I menu would today, have or do we? definitely 100%. So do we go with Saim first? Because Saim, Saim is, Saim. I mean, of course, Saeed Anwar didn't have a great series in that series, but he was in that series. But he was also one of Yes. the guys, one of the greats who was coming to an end. Also at Again, the end of his career. also at the end of his career, Saim को देख के I've already गलती मैंने ये कर दी है कि सईद अनवर और साइम को एक ही जुमले में मैंने साथ दोनों के नाम ले लिए. They're not the same. I'm saying this for all people who absolutely go ape crazy out there कि आपने एक मैच के बाद कंपेयर कर दिया, बच्चा है कल का, PSL है. PSL, like a batter from a PSL is almost the equivalent of a Tapia fast bowler in Pakistan sometimes. वो तो सिर्फ PSL में उसने करी है, ये क्या बकवास है. Saim Ayub, I just really enjoyed watching him bat in this series. जो कुछ मैंने देखा, which wasn't that much to be honest, but I enjoyed like following his innings, and it seemed like कि वो, I personally think he was playing the right innings in the last two matches. कि वो थोड़ा सा उसने शुरू में settle अपने आप को करा because the conditions were tough and they demanded it, and then he kind of burst in. There was some proper sexy shots. I think Australian crowds भी और Australian commentators भी काफी उन्होंने पिछले साल भी थोड़ा सा excited हो गए थे when Saim made his test debut at Sydney और उसने मिचेल स्टार्क को I think पॉइंट पे छक्का मारा था, तो लोग वैसे हो गए थे कि अच्छा ये कौन आया है लड़का. ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी और ऑस्ट्रेलियन एक्साइटमेंट जो होती है पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में, वो एक अलग किस्म की होती है. उसका भी मजा आता है कि वो देखते हैं लाइक अच्छा ये कौन है, ये तो कोई चीज है. इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा. हाँ, उमर अकमल को याद कंटिन्यू. रखना 2010 में. लेकिन ये साइम ने जिस तरह की बैटिंग करी है, आई जस्ट कुडंट हेल्प, एंड इट वाज ओनली हिज फर्स्ट फ्यू ओडीआईज यार. उसने इतनी ओडीआईज खेले भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, बट देयर वाज अ कपल ऑफ शॉट्स आई ट्वीटेड अबाउट इट. एक जो उसने शॉट खेला था, जो लैप उसने जो करता है, द फ्लिक काइंड ऑफ ओवर स्क्वायर लेग, it just like the instant I saw it, I remembered like one of my favorite Saeed Anwar shots ever, which was against Terry Alderman at the SCG. I tweeted about it, people have seen it. उसने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के रूफ पे स्क्वायर लेग पे मारा था, जो बॉल एक आपको ऑफ साइड पे आ रही थी, like it was going angling across him and he shuffled across and did this, but the finishing pose of them both was just perfect. And so when Saim did that against Mitchell Starc, Astafar, I'm not going to compare Saim to Saeed Anwar, but I will say कि vibes full वही मुझे लगी कि अच्छा यार ऐसे भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स पाकिस्तान के पास रह चुके हैं और अभी भी हैं. Saim, I was very happy to watch him bat. I was very happy to see the kind of innings that he played, the innings in the second and third ODIs, and really just like he completed the great work that the fast bowlers had done. For him to come out, Abdullah Shafiq को भी थोड़ा credit दें to kind of bat along with him in both those innings, और इनकी partnership जो कि सबको लगता है कि यार ये वाकई में वर्ल्ड क्लास और सक्सेसफुल पार्टनरशिप होनी चाहिए, but their test record has been appalling. Like the run in test cricket for both of them as an opening pair is abysmal. I may have more international runs than the both of them combined as an opening pair. इतनी बुरी इनकी रही है. लेकिन so for that reason, and there's no reason why it should be, because Abdullah Shafiq is a good batter, Saim is a very exciting batter, so it was really good to see them both put together some partnerships, and just to watch Saim be like just sexy and left-handed. एंड लाइक एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है लेफ्ट हैंडेड की सेक्सीनेस में कि आप थोड़े से स्लाइट से हो और वेफिश से हो. तो सईद अनवर भी कोई बल्कि नहीं था, बेचारे दुबले पतले से, कलाइयां उनकी पतली सी. साइम भी वैसा है. ब्रायन लारा, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, वाज आल्सो लाइक सो आई थिंक the smaller and the slighter you are as a lefty batter, the sexier you are. So I think on that front at least, Saim is 100% there. So just really good to watch him. आई थिंक ये जो अभी बात हो रही थी ना कि अस्तगफार, साइम और सईद को मैं कंपेयर नहीं कर रहा लाइक वगैरह वगैरह. पहली बात, अब मैंने ये अपने नोट्स में पहले लिखा था, तो अब मैं खुल पे कि भाई खुल क्या उस्मान समीउद्दीन कह रहा है ये, ठीक है. मतलब अगर हमारी दोस्ती है, उस्मान समीउद्दीन गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अप्रिसिएशन. और ये बड़ी अहम चीज है, क्योंकि एक बड़ा आसान है क्रिकेट पे लिख देना जी उन्होंने इतने रन बनाए, उसने इतने रन बनाए, इतने बनाए. उस्मान की जब राइटिंग मैंने पढ़ना शुरू की तो पहली दफा था दैट आई फेल्ट दैट द गेम दैट आई सॉ एंड फेल्ट वाज बीइंग डिस्क्राइब्ड. ये लेवल 20 साल से उस्मान का चलता आ रहा है, तो उस्मान जो कुछ भी कह रहा है लोगों को चुपचाप मान लेना चाहिए और जो नहीं मान रहा उसे चांटा मारना चाहिए. पहली बात. दूसरी बात
कि if you're making a comparison कि oh wow that Saeed shot reminds me of Saeed when somebody comes like इसने अभी कुछ अचीव नहीं किया है, तो it's kind of like कि आप स्कोरसेज़ी की पहली मूवी देख रहे हैं या बियॉन्से की डेस्टिनी चाइल्ड के गाने सुन रहे हैं और कोई आके आपको कहे कि नहीं इसने ग्रैमी नहीं जीता था और इसने ऑस्कर नहीं जीता था, लाइक शट अप ब्रो। लाइक कि मुझे मजा आ रहा है कुछ देखने में, it's giving me pleasure, it's giving me joy, it's reminding me of some other great artists, like व्हाट डज इट मैटर उसने क्या अचीव किया नहीं किया ये क्या, अभी आपको देखा ना आपने खूबसूरत था ना, लाइक लाइक हाँ। that in itself is worthy of praise, like there doesn't need to be some stupid caveat कि हाँ मगर 4 बजे के बाद जो मैचेस होते थे उसमें ये नहीं चलता, लाइक भाड़ में जाओ यार, तुम्हारी वजह से ये देखना तो आई थिंक इतनी अहमियत बढ़ appreciation चुकी है cricket on its own merit, in its own circumstance, वो अब कम होती है. Everything has to be compared to something else or put against something else. Just appreciate aesthetics for what they are. If they bring you pleasure, they bring you pleasure. And if they remind you of something, they remind you of something. It doesn't tell you that it's the same thing. It's just reminding you of something, which is how और humans exist, right? वही के मतलब, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को हार और जीत की नज़र में देखेंगे फिर बिल्कुल जायज़ है कि आप ये बोलें कि यार मगर इसने इतनी एवरेज है और इतनी स्ट्राइक रेट है वगैरह वगैरह, बट नहीं ज़रूरत कि आप सिर्फ ऐसे देखें, और ना ही हम ऐसे देख रहे हैं, वरना तो हम सिर्फ मैच स्कोर मतलब वो स्कोर बोर्ड लगा के आप देखते रहें, और क्या देखने की ज़रूरत है। लाइक किसी वजह से आप देख रहे हो भाई कि मज़ा आता है कि साइम के शॉट का, क्योंकि वही हमारे ग्रुप पे बहस हो रही थी वेयर कि साइम का शॉट बेहतर था या सईद अनवर का शॉट बेहतर था, एंड इन ऑर्डर आई फेल्ट कि द सईद अनवर शॉट वाज अ लॉट हार्डर टू हिट एंड द साइम शॉट वाज मोर एंजॉयबल, और मुझे ये भी था कि सईद अनवर की इससे ज्यादा मजेदार फ्लिक्स हैं, विच इज व्हाट सईद साइम इज लाइक, तो मैं वो फिर शॉट्स ढूंढ रहा था, आई फाउंड अदर ब्यूटीफुल शॉट, मतलब दैट्स द पॉइंट भाई, इसी वजह हाँ. से हम क्रिकेट देख रहे हैं यार, ये सब मतलब बाकी सारी चीजें ठीक है, टाइम ज़ाया करने के लिए आप थोड़ी बहुत बहस कर ले, बट दैट्स नॉट द मेन थिंग, एंड आई फील यही चीज़ जब मैं पहले मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग खास तौर पे देख रहा था, जस्ट लाइक मतलब अब जो कुछ हो ना हो, लाइक दिस इज सो फन टू वॉच, यू हैव टू गिव इट दैट क्रेडिट। Yeah. तो एक, अब मैंने ये बड़ी होल बातें कर ली, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, एक जो बात की ना उस्मान के ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अप्रिसिएशन, तो एक वो बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन चलती आ रही है, or whether you go all the way back to like Imran, and then especially चलो इमरान की मैंने फुटेज नहीं देखी है, बट वसीम के पहले टूर की मैंने फुटेज देखी है, they get super excited about him, they get Hmm. super excited when Shebi comes in the first time as well, um, but उस वक्त ये था कि नाइन के पास सारे पैसे थे, कवरेज थी, दे वेल पेड एंड दे वर ऑल दीज आइकॉनिक कमेंटेटर्स, जिनको मतलब वो आई मीन बिल लॉरी, रिची बैना वगैरह, एनीवेज द बेस्ट टू एवर डू इट, बट आई थिंक उसके बाद जो जनरेशन आई जो इतनी अच्छी नहीं थी, मगर उसमें तब भी था कि जो वो अगर एक्साइटेड होते थे ना किसी पाकिस्तानी के बारे में, जैसे कि उमर अकमल, तो वो एक Hmm. जेन्युइन एक्साइटमेंट थी, और वो हाँ. ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की हीली और टेलर और ये सारे जो थे ऑस्ट्रेलिया की तारीफें करते हैं, वाज अ गोट ऑस्ट्रेलियन साइड फॉर मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स। अब मुझे थोड़ी घिन आती है, क्योंकि साफ पता चल रहा होता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ब्रॉडकास्टर वो इतने खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान जीता है, क्योंकि अब थोड़े व्यूज भी आएंगे, अब हमारी ट्वीट्स को रीट्वीट्स मिलेंगी, इंस्टा पे हाँ. लाइक्स आएंगे, तो देर सो ईगर के पाकिस्तान जीत जाए, मतलब कि एंड ऑफ द डे पे तीसरा मैच एक लुल बशीर ऑस्ट्रेलियन टीम जिसमें हर ने इस बंदे को उठा के फेंक लिया था, उसको हराया है, और वो ऐसे बात कर रहे थे कि जी एशेस के बाद इससे बड़ी कोई बात ही नहीं, और अच्छी मतलब आई रियली फेल्ट दैट ग्ली एंड हैप्पीनेस एंड रिलीफ के यार आज दिहाड़ी तो पूरी होगी, थोड़े मैट्रिक्स अच्छे होंगे हमारे, हमारे यूजर्स बढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र है जीत गया पाकिस्तान, लाइक दैट thing that you now see in England or Australia, where the people who are involved in the business of cricket are desperate for the brown teams to win, because that way उनकी भी यार, दाढ़ी होती ये है कि उनका जो डिजिटल इम्पैक्ट होता है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स का या इंडियन प्लेयर्स का इन मुल्कों में, इट इज एट अ लेवल दैट दे डोंट एवर सी. एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्टली पैट मतलब कमिंस या बेन स्टोक्स की जो डिजिटल प्रेजेंस आप कंपेयर, या जिस साल जिन सालों में बाबर खेलता था समरसेट के लिए, एक साल तो ऐसा हुआ है कि समरसेट की जो यूट्यूब फीड थी वो क्रैश हो गई.
because there हम्म were so many people trying to access it because बाबर खेल रहा था. एंड और ये बड़े वो प्राइड से कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि हाँ यार हमारी यूट्यूब फीड उस साल गिर गई थी बिकॉज वी हैड बाबर और एंड स्टफ. सो दे एंड दे आर वेरी गुड एट एक्सिक्यूटिंग दैट डिजिटल. वो जो बट क्लिप्स लगाते हैं और सब चीजें करते हैं ना. मैं ये कहने लगा था कि जब एंड आई लेट यू कंटिन्यू सॉरी बट लाइक पहले वही बात मैं कहता कि सोशल मीडिया से पहले जब उमर अकमल की तारीफ थी ना तो आपको पता था कि एक जेन्युइन तारीफ कर रहे हैं हाँ. इनको अब ये नहीं है कि हमारे पैसे इससे जुड़े हुए हैं अब आई डोंट ट्रस्ट इट क्योंकि वो इतने खुश हो रहे हैं कि शुक्र व्यूज आ रहे नहीं, आई थिंक जो कमेंटेटर्स जैसे पॉन्टिंग हो गया या ये मार्क टेलर टाइप कमेंटेटर्स हो गए ना, जो सोशल मीडिया पे इतना नहीं वैसे ही नहीं हाँ होते हैं. हाँ दे आर द वंस हु आर लाइक कि हाँ ये अगर कहते हैं ना कुछ, मगर यू नो देयर गेम इज सो गुड. दैट्स जस्ट द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक. देयर गेम इज सो गुड. जैसे वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट्स वाज, आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का था. आई थिंक इट वाज क्रिकेट और इट वाज, या इट वाज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पोस्ट था. which shot was better, वो साइम का. एंड they know which shot to pick. ना एक ऊपर वाली उसकी स्ट्रेट ड्राइव थी और फिर सेकंड वाला जो शॉट था was the flick off. सही था ना. they are so well kind of versed into like the conversation that they know, and immediately they had that post out, which shot, who, which did he play better or whatever. So I mean, it's very good and it's very gratifying to see it. Just if you're just like ambling through your scrolling through your social media timelines, you know that you'll get good content from that at least. Magar the cynical side of it, of course, is that they're really like leaning in heavily leaning in. Isliye, like we knew, it's a very insidery thing, but we all knew कि जब बाबर पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया तो उसकी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस हो जाएगी, like the game will go crazy. Babar, and like you could see it. Babar finished off 2 games. He was at the crease for the winning runs in the last 2 games. Those are picture perfect moments for like Australia. उसकी कोई 90 की average है सीरीज में because he was unbeaten twice. मगर उसकी एक दो जो straight drives उसने खेली, beautiful drives of course, but like social media crazy immediately. The balance is there. It's good to see also in a way, but like yeah, being in the industry, I think वो फौरन से पता चल जाता है कि अच्छा ये लोग इसलिए कर रहे हैं because आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी इसकी वजह से और आपकी फीड डाउन हो जाएगी और ये एक अच्छी बात है that you're really leaning heavily into this.